we are going to discuss the correct error in the subject verb agreement. There are only 10 questions to discuss. So look at the first question. Here there are 4 parts or 5 parts. Sentence ro 5टा part अछि कोन part रे error अछि, which part there is in error you have to find out. And I also provides explanation for this thing, but you have to choose only, click on that part is an error, so that's it. So here there is a 5 parts. First one is if I was, it is category, it is coming under A, and I would have told, it is coming under B, and the chairman to keep, it is coming on, this part is coming on C, coming under the C, and his mouth shut is coming under the part D, and part E is saying the sentence has no error. Mane, what is called? So this sentence has 5 parts. In which part there is error, you have to find out. That's it. If the sentence is correct, then you should click on E. कहबा कथा होची कोन, जदि सेंटेंस ठीक अछि ताले नो एरर, you should choose E. There is no error in the sentence, then तुम कोन करियो, कोन चूज करियो, you should choose E, or you should click on E option. If there is error in A option, जदि A option रे error थाए, then you should click on A. But you need not to explain for this thing in exam, or I think this questions style would come in all competitive exam. So we will discuss. In which part there is an error. Look at this. If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. जदि मु तुमे ही थांती, नले जदि मु तुम जगार थांती, I would have told, मु तुम निश्चित भाव रे कहि थांती, I would have told the chairman to keep his mouth shut. तुम chairman को कहि थांती तुम पार्टी चुप कर रहो, एनु तुम कहि परिबुन तू, मींस से कोन कहछि, if I was you, जदि मु तुमे ही थांती, सपोज मु कहबे if I was कोन हबो, you, मु जदि तुमे ही थांती, तुम जगार थांती, then I would have told the chairman to keep his mouth shut. Means कोन part रो error अछि. So there is error in the first A part, because we also discuss in the above sentence. In the above sentence, the A part is wrong. Instead of was, we have to use where. I पाखर केबे where बसे नाही. We know the before I पाखर कोन बसियो, am बसिबो, I am, I was. I पाखर where केबे बसे नाही, एठी बसिबो. काहेकि it's a improbable, what is called, it's a conditional sentence that is called impossible and imaginary condition. If I were a king, जदि मु राजा ही थांती, if I were a king, जदि मु राजा ही थांती. So where symbolize to subjunctive mood of subject रो mood कौन, जदि मु राजा ही थांती, जदि मु तुम जगह थांती. It is impossible, it is imaginary condition. कहीं ना ए जिनस हबार चांस नहीं, कारण जिनसटा ऑलरेडी एक्शन ऑलरेडी सरी सारी. तापरे से कौन कहूँ, मु जो तुम जगह थांती, मु तांको छाड़ी न थांती, निश्चित भाव प्रत्युत्तर दे थांती. माने मो कहबा कथा होची, एठी आई पाखर वाज न होई कि वेयर हबो, कारण इट इज ए सबजंक्टिव मूड. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर ऑफ द प्रेजेंट, केमिति बसिथिबो, इफ और एज दो, ये सब थिले कोन हबो, सबजंक्टिव मूड को सिंबलाइज करूची. एंड वी आल्सो डिस्कस इन द व्हाट इज कॉल्ड इन द कंडीशनल सेंटेंस व्हाट इज द सबजंक्टिव मूड. बट एतिक जानि थाओ, आई पाखर वेयर केते बळे सियो जदी गुटे इम्प्रोबेबल imaginary condition कथा कहू थाए. सेमिति I have also written one example. If Mahatma Gandhi were alive, जदि महात्मा गांधी बंची थांती, he would start weeping to see the present condition of India. केमिति
इंडिया कोरोना रे लोक मैंने बहुत पीड़ित होउछंती एक्सपायर कर जाउछंती मृत्यु मुखरे पड़ुछंती किमिति यूथ माने मध्य तांको जीवन को हराउछंती सो वी आर लिविंग इन द पैंडेमिक so 2 year has been wasted because of pandemic means covid-19 pandemic means widespread of disease epidemic means a disease that spread a viral disease that spread into a country into one country or two countries it's not word broad range and endemic means it is a small area a district a small area the spread of disease is very what is called very low so it's a what is called endemic and pandemic so pandemic means corona so here the sentence Mahatma Gandhi were alive if Mahatma Gandhi were alive जदि महात्मा गांधी बंची थांती संभव ना is it possible जदि महात्मा गांधी बंची थांती he would start weeping से कांदिबा को लागिबे to see the present condition of India India रे condition को लक्ष्य करके से कोन कांदिबा पई लागिबे so he would start weeping लक्ष्य कर एठी गोटे आउट जिनस होचे स्टार्ट किछि भर्ब अछि तापर डायरेक्ट जिरोंड हुए दीटा भर्ब थिले कोन हो गोटे जिरोंड होबा पई पड़ियो स्टार्ट अछि तापर पुनी वीप अछि स्टार्ट वीपिंग ताहले कोन हला से कहछि महात्मा गांधी इफ महात्मा गांधी जे लिव जदि महात्मा गांधी बंची थांती ताने कोन हबो महात्मा गांधी वेयर लिव्ड एटी कौन बस सब्जेक्ट रे मूड हुए सेठी कौन बसियो वेयर बसियो आ वाज बसिबो नाही सो आई एम टॉकिंग अबाउट माने आई एम जस्ट सेइंग दिस इज ओनली थिंग्स सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you and I am going to take part in the meeting tomorrow and E part is saying no error the sentence has 5 parts कौन पार्ट रे तमर एरर अछि which part there is an error you have to find out if the sentence is correct you should click on E जदि sentence correct अछि ताने तुमको किछ और कहबा पड़िबो नाही ई पार्ट को ठीक बोली तमे कोन करबो ऑप्शन रे क्लिक करबो माने तुमको पड़िबो नाही व्हाट इज कॉल्ड you should not x1 okay in the exam also there is no time but you should choose okay, which part is there is error so we'll proceed here look karo here you have to what is called you have to use r in part of b एटी कौन कही you and I आउ गोटे जिन मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रे ऑर्डर को केमिति हमें also बेसिक I will not discuss a lot of things but simple things I will discuss 231 what is called it is also 231 कौन बसिबो it is order of pronoun केतळे सिंगुलर थिले कौन हो 231 सिंगुलर माने कौन ही 231 माने फर्स्ट सेकंड हो यू तुमे he and I go to school तुमे मु स्कूल को there is no error you and me समझी what is called तुमे आ मु माने बजार गलु कौन हम you and I नॉट एमती हेनी I and you कहीं ऑर्डर कौन कौन 231 अनुसार मैंने सेकेंड पर्सन प्रथम बसब तापर थर्ड पर्सन तापर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर केस रे प्लुराल रे कौन हम 123 फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लुराल मीन्स फर्स्ट पर्सन प्लुराल किए वी सेकेंड पर्सन यू थर्ड पर्सन किए दे तुमे आ से माने तुमे आ मु सॉरी आमे माने गलु कौन हम यू एंड वी प्रथम हूँ कौन वी एंड यू वी हूँ फर्स्ट पर्सन वी एंड यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट कंप्लीट करछंती इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन also we will discuss in the later class there are nine categories of types of pronoun we'll discuss but here से कौन कौन एटी एम हम एम न होगी कौन हम आर हम कहीं आर हम कहीं you and I the sentence become plural से कौन here the subject you and I joined which means that subject is plural you माने तुमे और मु जणे नुह the subject is
plural ସେଥିପାଇଁ am ନ ହୋଇକି କ'ଣ ହେବ are ହେବ so am ନ ହୋଇକି କ'ଣ ହେବ are going to take part in the meeting tomorrow ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ tomorrow ମିଟିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ we will proceed to the next third question so here his behavior with his all employees is pleasing that everyone comes forward to help him ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ କାହା ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ପ୍ଲିଜିଂ ମିନ୍ସ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖୁସି ସୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କମ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ସେଇଂ ନୋ ଏରର ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଜ୍ ନୋ ଏରର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରେକ୍ଟ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରେକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଇ ପାର୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରେକ୍ଟ ଥିଲେ ଇ ପାର୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଭୁଲ ଅଛି ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏରର ସୋ ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ is pleasing that everyone come forward to help him so we'll classify there is an error in part C so kahanki everyone puni come basti everyone symbolize mane singular nuhe everyone tapre come kon hobo come soba darkar na nahi so his behavior with all employees eta thik achi kichh nahi problem in part re is pleasing that खुशी अटे एवरीवन दैट एवरीवन रिलेटिव प्रोनाउन आसीगला दैट जोटा कि एवरीवन को समस्त माने समस्त माने इट इज इंडिविजुअलाइज्ड कौन हम कम्स न कि कौन हम सॉरी कम न कि कौन हम कम्स हम कम्स सो विल प्रोसीड देयर इज ए वायोलेशन ऑफ एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वायोलेशन है कौन पार्ट सी रे दैट यू हैव टू यूज कम न लिखिए कौन हम कम्स हम कम्स फॉरवर्ड बिकॉज एवरीवन इज ए सिंगुलर एवरीवन कौन एवरीवन इज ए सिंगुलर एवरीवन इज ए सिंगुलर तेज कौन हम सिंगुलर नाउन कौन हम एग्री विथ सिंगुलर वर्ब्स एवरीवन हेल्प्स हिम नॉट हेल्प एवरीवन हेल्प्स हिम नॉट हेल्प everyone knows the fact एटी knows कहीं है कारण everyone was a singular जमीदी he knows the fact everyone means it is talking about the one person it is individualized so it is a singular what was the question our question was his behavior with all employees is pleasing that एते खुशी जे एवरीवन समस्ते कौन करती कम फॉरवर्ड आसती हेल्प करने ये कम फॉरवर्ड न होकर कौन हम कम्स हम सो ताने आम कौन करवा देयर इज एरर इन सी पार्ट सो इन सी पार्ट वी विल ब्लैकन दिस होल और वी विल क्लिक ऑन द इंटरनेट सो इफ देयर इज एन ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यू शुड क्लिक ऑन ई पार्ट okay we'll proceed to next fourth question so in fourth question what is the fourth question is many men have succumbed to this temptation and e part is saying no error so look at this sentence also many men jodi eti many n obostanta tane kon heitanda m o e n heitanda एटी मैन अच्छी मेन नुह एम ओ एन हूँ कौन मैन एम ई एन हूँ मेन सो मेनटा हूँ प्लूराल मोर देन वन पर्सन आर इनवॉल्व किंतु ए मेन मीन्स जड़े दिस नाउन दिस सब्जेक्ट इज वन जन को बुझे ए मेन मेनी ए मेन मेनी लिखा हो कि ए मेन मीन्स जड़े ये हेव न कौन हम ए मेन थी कौन हम हेज हम ना so have no hogi kon hobo has hobo so to this temptation so there is a error in the a part sorry b part there is error in b part re error achi so we should click on b part explanation is the above sentence many a is singular so the verb
should be singular, sorry, should be used accordingly. जदि accordingly कहीं कोई कौन टेंस अनुसार बसवा पड़ो, सो यदि प्रेजेंट रही प्रेजेंट टेंस बसब, सो द verb should be used like माने accordingly means जदि सब्जेक्ट सिंगुलर थी verb सिंगुलर हम. जनरल रूल इन सब्जेक्ट verb एग्रीमेंट टू अवॉइड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी को जो फालासी जोटा क्रिएट होची बा सोलिसिज्म क्रिएट होची से को अवॉइड करने हेले कौन कर तुमको सब्जेक्ट सिंगुलर हेले verb सिंगुलर हम, सब्जेक्ट प्लुराल हेले verb प्लुराल हम. So if subject is singular, then verb is singular. Sorry, subject agree with singular verb. If subject is plural, then what is called verb agree with plural subject. So we'll discuss. So look at the fifth question. Fifth question is here. There is only one of his novels that are interesting. Sentence error भाया लगुच ना निश्चित भाव में. नो एरर हो पार्ट्रे जो पार्टर भूल अच्छे से पार्ट को तुम कौन कर क्लिक कर कंप्यूटर और यू विल ड्रैग इन द ब्लैक होल ताने कौन हम. सो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल तार जिते बही अच्छी गोटे इज देयर इज कौन देयर हूँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट. इज कहीं बसला इज ये बसुची कहीं तार रियल सब्जेक्ट हूँ किए ओनली वन नोवेल्स. ओनली वन हूँ कौन सिंगुलर ना नुहे से इज बसला. जदि ये टू मोर देन टू था ये कौन देर आर बसता. सो ये वन अच्छी वन पर इज बस वी नो दैट दिस व्हाट इज कॉल्ड दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज सिंगुलर. जदि सब्जेक्ट सिंगुलर होची एंड दैट आर इंटरेस्टिंग पुणी आर कोड आसो. आर मीन्स इट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन बुक बट हियर इज वन बुक इज टॉकिंग अबाउट द वन बुक. देयर इज वन बुक ओनली वन बुक. सो इट इज कॉल्ड सो आर न कौन हम इज हम. सो विल प्रोसीड दी एक्सप्लेनेशन कौन कौच यूज इज इन प्लेस ऑफ आर. देयर इज एरर इन पार्ट सी. पार्ट सी रे एरर अच्छी पार्ट सी रे एरर अच्छी पार्ट सी रे ना that are interesting. In part C there is an error, so you should click on the part C or drag in the wall in part C. So कौन कौच only one of the novel is real subject which is considered to be singular जोटा कि singular हिसाब से consider कर and the plural verb not used cannot be used. plural verb हो पारिबो नाही. एटी कौन हम is आर न कि कौन हम is हम. So we'll proceed to the next question. That question number 6. A patience as well as perseverance are necessary for success. Patience means कौन धैर्य और perseverance means continuity. Perseverance means continuity. Continuity means what is called endurance ने परिश्रमी. Diligent means working, hard working. Patience रहा दरकार and hard working करिया दरकार, then you will get success. So look at the sentence. Who is the subject? Patience and perseverance. So here that noun phrase NP, more than one what is called nouns are here. Patience as well as कहा द्वारा conjoined है as well as द्वारा आमे रूल पढ़ी थे as well as in addition to when together with like unlike unlike ये सब थे कौन हम the verb agree with the first subject. प्रथम सब्जेक्ट अनुसार verb agreement हम. Patience as well as perseverance are necessary for success. Yes and yeah. So we will proceed to the next question. Patience as well as perseverance are necessary for success. एटी आर हम ना कहीं हम ना कारण दीटा नाउन क्या द्वारा कंजॉइंड एज वेल एज द्वारा आम पढ़ी व्हेन two nouns are conjoined, two noun or pronoun are conjoined as well as join है क्या द्वारा in addition to along with. so with eso थिले unlike एटा सब थिले कौन हम sentence the verb agree with the first subject अनुसार verb agreement हम. So when two subjects are joined by with and the verb agree with first subject,
patience is a singular subject, hence what is called patience is singular subject, hence we will take, hence it will take on singular verb according to the tense. So patience is always as well as perseverance, patience as well as ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ, diligent hard working are necessary ନୁହଁ, ଏଠି is necessary। କାହିଁକି is necessary? So it is necessary, are ନୁହେଁ। କାହିଁକି? So are ହେଇଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସରି ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? are ହେଇଥାନ୍ତା। ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? are ନ ହେଇକି is ହେବ। So we'll proceed to the next question. So next question is it is I part 1 रे B रे कौन अच्छी who is to blame and C रे कौन अच्छी for the bad situation. It is I who is to blame for the bad situation. Bad situation में ये होची सही जे सबोले निजो bad situation को कौन को blame करे, मु किछि करि बेले मोर एमदी असुविधा हेतला। So excuse दिए, look at these things, कौन पार्ट एरर अच्छी, in which part there is an error, ताने तुम कौन करिवो, you have to choose and click on this part. So if the sentence is correct, like previous, you should click on D option, sorry D option, yes. And then what is the sentence stock error? There is an error in B part, kahengi it's a relative pronoun कथा कोइ आमे पढिथिले, we have studied also when there is a relative pronoun, so the subject agree with, the verb agree with antecedent, antecedent अनुसार माने अनुग विषय बसिबो केमिति, it is I who जे blame करथिला, it is I ना, से I अनुसार subject agreement हबो। There is an error B part in explanation कौन कहूची, to avoid, to avoid this error of proximity, this change should be, the change, in order to avoid the proximity, error of proximity, the change should be कौन है परिबा दरकार, into is into m हवा दरकार। काहेंगी एठी आई पाखर is बसिबो नाही, आई पाखर कौन बसिबो, m बसिबो। सो आई जेहेतु सब्जेक्ट अच्छी, इट इज आई, एठी ही थिले कौन हेतंदा, इज हेतंदा, आई अछि बोली एठी कौन हबो, एठी m हबो। ताले इन व्हिच पार्ट देयर इज एरर, पार्ट बी। सो कौन अच्छी पड़ेनि एई पार्ट रे चेंज हो, जो पार्ट रे चेंज हो सेई पार्ट को तुम क्लिक करियो, फर्स्ट पार्ट नुहे। ताले इन बी पार्ट there is an error, so you should click on B. If the subject verb are joined a relative pronoun, जदि subject कौन हेतिबा verb relative pronoun द्वारा joined हेतिबे, the verb used will agree with, the verb will agree with the antecedent part to the relative pronoun। antecedent माने अनुग, काहा सहित एग्रीमेंट हबो, एग्रीमेंट हबो अनुग सहित। इट इज आई अछि एटी दे थिले कोन हेतांदा, हु आर अकॉर्डिंग टू टेंस आर किबा वेयर बसतांदा। सो एटी आई अछि हेते कोन हबो, एम बसिबो। जदि पास्ट टेंस थांदा एटी वाज बसतांदा। सो इट इज नॉट मैटर, द मैटर इज द वर्ब एग्री विथ द कोन रिलेटिव प्रोनाउन। जदि रिलेटिव प्रोनाउन जदि वर्ब एग्री विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट पार्ट। एंटीसीडेंट माने रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व कौन बसची, ये हु एठी क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन नुहे। सेंटेंस मझे बसले कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस पूर्व बसले प्रथम आरंभ बसले इंटरोगेटिव क्वेश्चन, हु इज योर फादर, हु इज योर फेवरेट actress, who is your favorite teacher. So it is called, what is called WH question. But in sentence, in the middle of sentence, if used who, then what is called, it is kiye nuho, GA. It is I, GA is to blame for his bad situation. GA निजो bad situation को सबल भाई कौन करची, दोष आरोप कर आसुची, दोष आरोप कर आसुची. So it is I, it is you who insult me. So what is called, it is what is rules, the rules is to avoid the error of proximity, you should the verb should agree with antecedent part.
If antecedent part is singular, then verb should be used in singular form according to tense. Tense अनुसार कौन tense suppose present रही present बसिबो, past tense ले past बसिबो. So you should look at also that. And we'll proceed to the next question. Next question कौन कहूची, our success or failure, our failure largely depend upon our action. आम कर्म उपरे निर्भर करुची. सक्सेस पाइबो कि फेल हबो बा कौन कहा पर डिपेंड करुची, लार्जली डिपेंड्स ऑन और डिपेंड ऑन से कौन कहूची डिपेंड कथा अछि. अच्छा डिपेंड ऑन आवर एक्शन, एक्शन उपरे डिपेंड करुची. आमे रूल कौन पढ़थिले, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सब थिले कौन हबो, द वर्ब एग्री विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट. एट नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन अछि, और अछि ना नहीं, और द्वारा सेंटेंस जॉइंट होइछि आवर सक्सेस और आवर फेलोर. ताने आवर फेलोर सिंगुलर ना प्लुराल, प्लुराल निश्चित भाव सिंगुलर. ताले कौन हम केमिति कौन एग्रीमेंट हम. सो एग्रीमेंट इज आवर फेलोर इज सिंगुलर नंबर. ताने लार्जली डिपेंड्स ऑन, एटी कौन डिपेंड न होई कौन हम डिपेंड्स हम. सो विल डिस्कस ऑल्सो. Look, our success is our failure. Success or our failure. Success our failure largely depends on कहाँ पर our action. तन कौन part रे error अछि. So there is a error in B part. B part रे error अछि. So the change depend into depends हवा दरकार. एटी कौन depends हवा दरकार कारण कौन this subject is singular. Subject is singular. क्या सहित एग्रीमेंट हम, नियरेस्ट सब्जेक्ट और परे जी अच्छी से अनुसार एग्रीमेंट हम. आवर फेलोर कौन सिंगुलर से वर्ब क्या सहित एग्रीमेंट हम, आवर फेलोर सहित हम. सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 miles आर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट. 10 miles जीवा कौन इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट. फुट माने पादरे जीवा एंड ई पार्ट इज नो एरर. देन कौन सेंटेंस ठीक अच्छी भूल अच्छी. वी शुड लुक एट ऑल्सो व्हिच पार्ट देयर इज एन एरर. से कौन कहूँ द 10 mile इज ए प्लुराल फ्रॉम. निश्चित भाव में 10 miles आर प्लुराल बट यूज्ड इज ए सिंगुलर यूनिटी. कहीं व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिटी, ए सिंगुलर यूनिटी कथा कहले द सिंगुलर वर्ब यूज फॉर इट. ये सिंगुलर हम 10 miles कौन हम ये आर न कि यूज हम. सेमती 10,000 rupees इज सफिशिएंट फॉर परचेजिंग ए लैप सॉरी व्हाट इज कॉल्ड ए सेल फोन, एंड्रॉइड फोन. सो इट इज टॉकिंग अबाउट दिस सी कौन कहते अमाउंट क्वांटिटी सॉरी अमाउंट हाइट वेट जो गोटे यूनिट को रिप्रेजेंट करूए सिंगुलर हम. इट बिकम सिंगुलर. सो 10 miles इज ए प्लुराल फॉर्म बट यूज्ड ए सिंगुलर यूनिटी. एटी सिंगुलर यूनिट कथा कही. सो हेन्स इट इज यूज्ड एज ए कौन सिंगुलर. सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक दैट इज वन ऑफ माय डिजायर. मो इच्छा मध्यरु वन ऑफ माय डिजायर्स, डिजायर्स माने इच्छा, आर टू बिकम डॉक्टर. मोर बहुत इच्छा अच्छी कौन हम डॉक्टर हाँपाई. ताने कौन हम आई हैव डिजायर टू बी समथिंग बट से कौन कहूँ वन ऑफ माय डिजायर. मोर जिते इच्छा अच्छी तर मो माने ऑप्शन अच्छी बैकअप ऑप्शन गोटे कौन डॉक्टर हेबी कि आईएएस सिविल पढ़ापढ़ी करी कि लेक्चर हेबी. सो देयर आर मेनी ऑप्शन बैकअप और बिजनेस करी. सो तुम्हें कौन कहूँ वन ऑफ माय डिजायर जिते डिजायर अच्छी गोटे गोटे कथा कही ना नाई. वन ऑफ माय फ्रेंड्स एटा सिंगुलर ना प्लुराल सिंगुलर. सो देयर इज नो प्लेस ऑफ वन ऑफ माय डिजायर इज ए सिंगुलर. निश्चित भाव में जदि सिंगुलर ये आर कहीं बसो ये कौन हम इज हम. इज टू बिकम ए डॉक्टर. सो इफ से कही इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर इज एंड एवरी each of my students each look कौन इज कौन ऑफ बसे. ऑफ इज यूज्ड आफ्टर each and every or one of my friends is doing PhD in English in IIT Kanpur. One of my friends is doing PhD in English in IIT Kanpur. His name is Metin Jacob. So she is from Kerala. He is one of my friend. So what happened? If
of is used after each and every and one, so etc. The noun or pronoun that comes immediately after of, noun and pronoun after of पर जहाँ आसबे कि noun or pronoun कौन आसबो will be plural form. One of my friends, एटी friends ହେଲା ନାହିଁ. One of my teachers, one of my lectures. So what happens, one of ପରେ plural noun ବସିଥିବ କିନ୍ତୁ subject is singular. ସେମିତି କ'ଣ କହିଥିଲା one of my desires, ମୋ desires ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ. So however the verb, pronoun etc that comes in later part of the sentence will be singular form. ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେ desire, ଏମିତି ବି ଦେଖ one of my desires means କ'ଣ, one of my desires means ମାନେ desire ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ singular ନା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ. ସୋ ଆର୍ should not be used, ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେବ according to tense, କାରଣ ଆର୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ ହେବ. ଯଦି ଏଠି was ଥାନ୍ତା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି were ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, was ହେଇଥାନ୍ତା. So I think I have completed the 10 questions. Okay, we'll see you in the next class with the remaining what is called questions in the subject verb agreement. Thank you. See you then.